Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our second session on legal maxims. We talked about that legal maxims are very important for your law preparation. Legal maxim की तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आपकी क्लैट की परीक्षा के अंदर या AILET की परीक्षा के अंदर लीगल मैक्सिम्स या तो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या कोई और लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये पूछे जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, लीगल मैक्सिम की तैयारी करने से आपका लीगल रीजनिंग के रिलेटेड जो इंटरप्रिटेशन का जो पावर है वो बढ़ सकता है। बिकॉज अगर लीगल प्रिंसिपल में कहीं पे लीगल टर्म यूज किया गया या लीगल मैक्सिम यूज किया गया, सो आई थिंक यू शुड बी इन अ पोजीशन टू नो, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। और इस पर्पस की वजह से वी हैव टोल्ड यू दैट एवरी वीक we'll be giving you one video, and this is our second video for this particular week. Last week we gave you one, so this will continue for 2 months. So in all you'll be getting some around 8 videos on legal maxim. So this is our second session. Okay, here we are going to discuss 10 maxims. Okay, so we are going to discuss 10 maxims, and we are very happy that all of you liked us on our first video on legal maxim. We have tried to put in so much of detail which is necessary for this particular part. Okay, तो इसको बिल्कुल आप भूलिएगा मत, और protalentdigital.com के ऊपर जाके आप इसका PDF यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड de jure and de facto. Two words, ठीक है, two words. One is called de jure and another is called de facto. ओके, सो भाई de facto का क्या मतलब है? ठीक है, de facto का मतलब है कि भाई existing in fact, although it is not intended or legal or it is not accepted, but though it is there, ऐसा होता है, ठीक है, it is there in fact. For example, the city is rapidly becoming the de facto center of the financial world, है ना? किसी ने उसको अलग से लीगल पोजीशन नहीं दी है, but by the actions of so many activities it has become a de facto capital of the financial world. ठीक है, और he is her de facto husband, though they are not actually married. So they are not actually married, but that person is behaving like a husband. English is a de facto the common language for much of the world today. आज के जमाने में English is a de facto common language. Now what does that mean? भाई ऐसा कहीं पे announce हुआ नहीं है, but it is like acceptable. If you go to Spain, if you go to Switzerland, if you go to, let's say, Japan, there is a possibility that you can use English as a common link language. Again, it is, if it is not British soil, then it is de facto British. ठीक है, if it is on British soil, कोई भी चीज अगर British soil पे है, then it is de facto British, वो उसी का है. That's how the de facto can be used. Let's see how de jure means. De jure means it is existing in law, ठीक है, or having a formal, legitimate, moral or rightful effect. Use usually as an opposite of de facto. ठीक है, so de jure and de facto वैसे opposite words है, ठीक है, they are antonyms in a way. De facto बोलता है लॉ के द्वारा नहीं है, but it is existing. Factually that is right. De jure का मतलब होता है कि भाई लीगली उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन दे दी है, फॉर्मली उसको अनाउंस करके रखा है. यू मस्ट ऑलवेज बी इन de jure of the law so that no fines or penalties are levied against your business or you. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, you should be in de jure. That means you should follow the law. ठीक है, सो भाई स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं? अब ये de jure और de facto का गणित क्या होता है? भाई there are certain standards in the industries. There are two kind of standards. One is called de facto standard and other is called de jure standard. De jure is by law. लॉ के द्वारा
बनाए गए स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड डी ज्यूर, एंड डी फैक्टो इज बेसिकली बाय द स्टैंडर्ड ऑफ यू कैन से अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसमें लॉ ने कुछ बोला नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, दैट इज बेसिकली डी फैक्टो बाय दी यू कैन से स्टैंडर्ड, कोई लॉ ने बनाया नहीं है, बट इट इज डी फैक्टो कि इट विल बी सम पर्टिकुलर साइज। ओके, ठीक है, आप अगर कहीं कोई लेट्स से लस्सी या कोको पीने जाते हैं तो ग्लास का साइज क्या होगा, उसमें कोई लॉ नहीं लगा है, इट्स अ डी फैक्टो कि भाई इतना होता है, ठीक है, यू कैन नॉट गिव अस वेरी स्मॉल साइज, you cannot expect a very big size, it will be a moderate size. Okay, that is a de facto. What is de jure? De jure is कि भैया सरकार ने बोल दिया कि इतनी क्वांटिटी अंदर होनी ही चाहिए, उस तरीके का कोई स्टैंडर्ड बना देना। ओके, दैट इज कॉल्ड de jure. Okay, so de jure standards which are part of legally binding contract or law or regulations, और de facto में ऐसा कुछ नहीं, it is primarily coming from informal convention or dominant usage. I hope this is very clear to you between de jure and de facto. Okay, let me move further and talk about the next point, which is called de novo. De novo is to make something anew. De novo is to make something anew, ठीक है, which is a kind of afresh, starting afresh. For example, de novo kidney transplantation, ठीक है, kidney transplantation to be started afresh, ठीक है. So what is, you can say, de novo, how it is, what is the meaning to that? So it says a trial or hearing that is ordered by an appellate court that was reviewed the record of a hearing in the lower court and sent the matter back to the original court for a new trial, ठीक है, as if it had not been previously heard or not decided. That is how the de novo. Okay, जयललिता के केस में कोर्ट ने ऐसा बोला था, द मैटर कैन नॉट बी रीओपन डी नोवो, ठीक है, उसको नए तरीके से, अब फ्रेश की तरीके से इसको नहीं ओपन किया जाएगा. सो कभी कभार कोर्ट इस तरीके से जजमेंट देती है कि भाई द मैटर कैन नॉट बी ओपन डी नोवो, सो दैट मीन्स सेम केस कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ अ फ्रेश आउटलुक. ओके, while CBI in the case of आरुषि तलवार केस, आई एम श्योर आपको पता होगा, आरुषि तलवार केस में उनके जो फादर मदर थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके ऊपर आरोप लगा था और उनको जेल भी हुई थी, और बाद में कोर्ट ने डिसाइड किया कि दैट द एविडेंसेस वर नॉट सफिशिएंट इनफ, ठीक है. सो CBI इज इंटरेस्टेड टू, यू कैन से, रिज्यूम दिस मैटर डी नोवो, so they want to start this case afresh. That's how the de novo can be used. One more usage is mentioned here, de novo prediction of three-dimensional structure of a major protein families. Okay, that's what the meaning of a fresh prediction. He filed a motion for a de novo hearing. उसने de novo hearing के लिए एक fresh petition file किया है. That's how the de novo means. Okay, so this was our second maxim called de novo. Coming to third one says dictum. Now what is a dictum? Dictum is very interesting. It's a statement of law made by a judge in the course of its decision. जो जज ने कोई स्टेटमेंट बताया है, ठीक है, in the course of decision, but it is not necessarily to the decision itself. Okay, so वापस समझते हैं डिक्टम का क्या मतलब है. डिक्टम सिंगुलर में डिक्टम बोलते हैं, प्लूरल में डिक्टा बोलते हैं. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन कंसिडर्ड ऑथोरिटेटिव, ठीक है, एक ऐसा ओपिनियन है जो ऑथोरिटेटिव माना जाता है, ठीक है, गिवन दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पर्सन हु इज इन ऑथोरिटी. ओके, ठीक है, कोई बंदा ऑथोरिटी में है और वो कोई स्टेटमेंट बोल देता है, दैट इज कॉल्ड डिक्टम, ठीक है. डिक्टा इज अ प्लूरल इन द सेंस आर नॉट बाइंडिंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट डिसाइसिस, ठीक है, वो कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट दैट मीन्स इट इज नॉट अ जजमेंट. ओके, स्टेट डिसाइसिस मीन्स इट्स अ जजमेंट. ओके, ठीक है, आगे हम देखेंगे स्टेट डिसाइसिस का मीनिंग, पर अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं स्टेट डिसाइसिस का मतलब होता है जजमेंट. ओके, विच इज लीगली एस्टैब्लिश्ड. स्टेट डिसाइसिस लीगली एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, but it tend to have a strong persuasive effect
by virtue of having been stated by an authoritative person, ठीक है, or a judge, ठीक है, or by some authoritative decision, ठीक है. For example, someone says wrong is wrong, right is right, ठीक है. That's how the kind of dictum would be, ठीक है. अब जैसे सलमान खान के कुछ मूवीज के अंदर वो डायलॉग आता है कि समझ में नहीं आता हूं पर दिल में आता हूं, ठीक है. So that's a kind of dictum, है ना, which is a kind of opinion which is not necessarily decision itself. अब ये तो बिल्कुल एक एग्जांपल था जोक के नजरिए से, पर आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. डिक्टम. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट फ्यू मोर वर्ड्स एंड टाइप्स ऑफ डिक्टम. ओके, लेट मी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिक्टम. क्या क्या होता है? एक होता है डिक्टम प्रोप्रियम. डिक्टम प्रोप्रियम, इट इज पर्सनल और इंडिविजुअल डिक्टम that is expressed by judge who delivers an opinion but that is not necessarily concurred in by the whole court. पूरी कोर्ट ने, है ना, पूरी कोर्ट ने नहीं माना, it is one individual judge has this opinion, ठीक है. Next is called gracious dictum. It is an assertion that a person makes without being obligated to do so, or a court's discussion of a point or question not raised by the record or its suggestion of a rule not applicable in the case at bar. So that means it is gratis dictum. मतलब एक कोर्ट अपनी ऑब्लिगेशन के द्वारा उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं बोल रहे और ऐसे डिस्कशन का कोई पॉइंट आ रहा था, उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट बोला विच इज नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द कोर्ट का कोई भी तरीके का ओपिनियन, ठीक है. देन वी हैव अ जुडिशियल डिक्टम. इट सेज इट्स एन ओपिनियन by a court on question that is directly involved, briefed and argued by counsel, even passed on by the court, but that is not essential to the decision. कोर्ट ने भले उसको पास कर दिया है ना, इट इज जो भी केस है उस केस के मुताबिक इसके बारे में बातें चल रही है और उसी के रिलेटेड ओपिनियन है, ठीक है, पर वो डिक्टम है, विच मीन्स इट इज स्टिल एन ओपिनियन, ठीक है, which means it cannot be taken as a final judgment. Okay, so it's an opinion. Obiter dictum. Obiter dictum, that it says something said in passing, ठीक है, कोई कमेंट लगा दिया जज ने, कोई कोर्ट का अंदर डिस्कशन चल रहा था और उसमें कोई जजमेंट दिया, उस जजमेंट में कोई पासिंग रिमार्क है, ठीक है, कोई पासिंग रिमार्क है, दैट इज कॉल्ड ऑबिटर डिक्टम. ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पासिंग एग्जांपल दिया था सलमान खान का, तो दैट मे बी टर्म्ड एज ऑबिटर डिक्टम, okay, in our this scenario, but obviously I am not a judge and therefore this is not obiter dictum, but I hope you understand that. And simplex dictum, it is unproved or a dogmatic statement. कोई statement जो सिर्फ एक opinion है, कहीं prove हुआ नहीं है, ठीक है, it's just an unproved statement, that is called simplex dictum. Okay, so these are the different types of dictums available. Okay, chaliye, great, let's move towards number 4. ठीक है, नंबर 4 talks about detinue. Detinue is tort, it's a part of tort, it's a wrongfully holding goods which belong to someone else. Okay, I'm sure you might have seen a movie called Lunchbox or you might have heard about that movie. अगर आपने नहीं भी देखा हो, आपने सुना होगा that this hero, that is Irfan Khan, used to get the tiffin from someone else. किसी और का टिफिन किसी और पर्सन के पास जा रहा है, so he was wrongfully holding goods which belong to someone else, ठीक है. In tort, detinue is an action to recover for the wrongful taking of personal property, ठीक है. It is initiated by an individual who claims to have a greater right to their immediate possession than the current possession, ठीक है. So that is called detinue. बराबर है. आपने लेट्स से अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर करी थी और आपके घर पे आई, आप घर पे मतलब थे नहीं, तो आपके बाजू वाले ने वो ऑर्डर रिसीव किया एंड लेट्स से ही स्टार्ट यूजिंग इट, सो ही इज रॉन्गफुली होल्डिंग गुड्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू हिम, सो दैट इज कॉल्ड डेटिन्यू एंड दैट कम्स अंडर टॉर्ट, एंड टॉर्ट के द्वारा यू कैन आस्क फॉर कंपेंसेशन. ओके, सो टॉर्ट are a separate system of law, ठीक है. We'll be covering those tort related discussion as well. Currently you should know that it is a tort law
which is a civil wrong, it is between two people, दो लोगों के बीच में कुछ गलत चीज हो जाती है, तो जिस बंदे का गलत हुआ, जिसको नुकसानी हुई, उस बंदे को आगे वाले पर्सन से बेनिफिट मतलब कंपेंसेशन मिलना चाहिए. Okay, so that is what the tort is. Coming to next point is called donatio mortis causa. Very important thing. Donatio mortis causa. Donatio, a kind of donation. Mortis, upon death. So a gift of a personal property made by someone who expects to die in the immediate future, taking full effect only after the donor dies. Let's say if I give to someone saying that one of my friend कि अगर दोस्त मैं मर गया तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ठीक है, तो जब तक मैं जिंदा हूं प्रॉपर्टी किसकी, वो मेरी है. He will be getting benefit only and only upon my death. I hope that is very clear. Okay, so that is called, you can say, donatio mortis causa. It is now established that the real property, whether house or land, can be subject of a valid donatio mortis causa as per the Court of Appeal decision in 1991 Sen versus Hadley. ठीक है, अब ये केस क्या था? The deceased was close friend of the claimant, which is Mrs. Sen. Some 3 days before his death, Mrs. Sen asked him what she should do about house were he to die. वो बंदा शायद डेथ बेड पे होगा. मिसेस सेन ने पूछा कि अगर आप मर जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी का मैं करूं क्या. His reply was, the house is yours, Margaret, है ना, you have the keys. ठीक है, they are in your bag, the deeds are in the steel box. Shortly after that, the deceased died. ठीक है, and the question arose whether there had been a valid donatio mortis causa. और ये केस पहुंचा 1991 में, सेन वर्सेस हेडली करके केस फेमस हुआ. उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट थे, ठीक है, टू प्रूव that whether it is donatio mortis causa. Number 1, gift must be made in contemplation, although not necessarily in expectation of impending death. ठीक है भाई, डेथ हो रही है उसको एक्सपेक्ट करके नहीं होना चाहिए, बट इन कंटेम्पलेशन कि अगर मैं मर जाऊं तो इस प्रॉपर्टी का क्या होगा. दैट्स हाउ द कंटेम्पलेशन. ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन. दैट्स अ डिफरेंस, है ना. ठीक है कि भाई आप मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू विल डाई एंड देयरफॉर आई एम एक्सपेक्टिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए. लेट्स कंटेम्पलेट कि अगर कोई बंदा मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा. सेकेंडली, द गिफ्ट मस्ट बी मेड अपॉन द कंडीशन that it is to be absolute and perfected only on the donor's death, being revocable until that event occurs and ineffective if it does not. ठीक है, मतलब वो रिवोकेबल है. अगर मानो मैं कमिट करता हूं किसी को कि भाई मेरे मरने के बाद आपको ये मिलेगा, तो वो रिवोकेबल भी होना चाहिए. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर जिस पर्सन ने कमिट किया उसकी डेथ नहीं हुई तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा. एंड थर्डली, there must be a delivery of subject matter of gift or the essential indicia of the title thereto, which amounts to parting with dominion and not merely physical possession over the subject matter of the gift, which means there must be a proper delivery of the subject matter. Simply ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका possession ही हो सिर्फ, है ना, ट्रांसफर होने का complete you can say पावर होना चाहिए. तीनों 3 चीज अगर होगी तो डोनेशियो मोर्टिस कॉसा होगा. So I hope that is very clear. Coming to number 6. Sixth बोलता है estoppel. What is estoppel? Prevented from denying. What is the meaning of prevented from denying? Very simple. Estoppel is a judicial device. Remember that. Legal system के द्वारा, ये कोर्ट के द्वारा लिखा हुआ आता है, ठीक है, whereby a court may prevent or stop. Stop, that is a person who performs, this is called stopped, ठीक है, a person from making assertion or from going back to his or her own words. Let's take an example. A landlord informs a tenant that rent has been reduced, है ना, ठीक है, that is what he has reduced because there was a construction or a lapse in utilities services. कुछ कारण की वजह से उसने बोला कि अब रेंट हम कम करेंगे. And if the tenant relies on this statement in choosing to remain in the premises, the landlord could be stopped from collecting full rent.
that is called estoppel. Okay, that is called estoppel. Promissory estoppel आता है. So there is a promise coming from someone saying that I will not do this. That's called promissory estoppel. Saying that it is a promise given by someone कि हम ये काम नहीं करेंगे. That's called estoppel. Coming to number 7, ex parte. Proceeding in the absence of the other party. That's called ex parte. Ex parte decision देना. That is basically, it's a one decided by a judge without requiring all parties to the controversy to be present. That's called ex parte decision. Similarly, ex parte means a legal proceeding brought by one person in absence of and without representation or notification of the other party. Okay, so that is called ex parte. What is the general principle? It says a person shall not be deprived of any interest in liberty or a property without the due process of law. So in practice, government cannot take a decision ex parte. It has to do through due process. ठीक है, अपनी मनमर्जी से उसका डिसीजन नहीं ले सकते. ठीक है, तो उस सामने वाली पार्टी का एक जो भी ओपिनियन है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो करना बिल्कुल जरूरी है. ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं. ये बोलते हैं, हाई जॉन डो, हियर आर इंपॉर्टेंट लीगल पेपर्स फॉर यू. सो दिस डो बोलता है, आई डोंट वांट देम, गो अवे. ही सेज, आई एम लिविंग देम हियर फॉर यू. आप इसको पढ़ लीजिए, so that it doesn't look like ex parte, it is not one sided. I hope that is very clear. Okay, coming to number 8, ex gratia. Ex gratia as in as a favor. ठीक है, ये कार्टून आपको बताता है ना, एक हमने ये इंटरनेट से लिया है. ठीक है, दिस कार्टून एंड क्रिएटिव कॉमन लॉज के मुताबिक है ना, दिस इज मतलब दिस नॉट आवर प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट वे, वी आर जस्ट यूजिंग इट for sharing purpose. Okay, so it says government has released a total of so much of 62.3 million. So this person says, oh, this is insensitive, how corrupt is the government? And then it says is an ex gratia for the former ministers, and then say, oh wow, great. So what is ex gratia? As a favor, पुराने जो ministers थे उन सबको ये payment मिलेगा, and therefore this ministers become happy. ठीक है, so examples देखते हैं. अभी recently कुछ news items आई थी, मैंने वहीं से ये लिए हैं, है ना. news items में से उठाए. Jammu and Kashmir government announces rupees 4 lakh ex gratia for families of 3 killed in avalanche. Avalanche मतलब जो भूस्खलन होता है, जो प्राइमरली स्नो का स्खलन होता है, बर्फ गिरती है. ठीक है, उस समय पे पहाड़ों के ऊपर से गिरती है और लोग मर जाते हैं. That is called avalanche. And Navjot Singh Sidhu announced that ex gratia of rupees 5 lakh and one government job for the kin of Iraq victims. इराक में रहने वाले कुछ लोगों को परेशानी हुई, तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने ये अनाउंस किया था. दैट्स कॉल्ड एक्स ग्रेशिया. उसी तरीके से आता है एक्स ऑफिशियो, है ना. एक्स ऑफिशियो पोजीशन बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड. ठीक है, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है भाई. नरेंद्र मोदी जी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, एंड बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन of Niti Aayog. Okay, because he is a prime minister, that means tomorrow if Mr. Nitin Parmar becomes prime minister, then he will automatically become the chairman of Niti Aayog. I hope that is very clear. Okay, similarly, whosoever is a vice president of our country, whosoever is a vice president of our country, so that is Mr. M. Venkaiah Naidu, automatically he will become the chairman of Rajya Sabha. That is called ex officio position. So it is often used in the context of legislative bodies to automatically confer a membership on a subcommittee to a chairman and top minority member of a committee. आप एक particular position handle कर रहे हो, automatically आपको दूसरी position मिल जाती है. That's called ex officio position. And then the next one, 10th one, would be habeas corpus. It is a writ. I hope we discussed writ last time. Okay, writ is a written order. What kind of writ it is? It is saying that to have a body of a person to be brought in before the judge. Okay, that is called habeas corpus. Show me the body. That is the meaning of that. इसका purpose क्या है? To prevent unjust imprisonment. ठीक है, अगर पुलिस आके किसी को पकड़ के लेकर जाए unjust way में, then we can go to the court and ask for we can issue this writ called habeas corpus and ask police to present that person in front of a judge. This is a writ. Okay, article number 32.
which is heart and soul of our Indian Constitution. ठीक है, हार्ट एंड सोल फंडामेंटल राइट का पार्ट है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हेबियस कॉर्पस आता है. 5 रीट्स आती है. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन. ये पांचों 5 रीट्स के मीनिंग वापस देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दीजिएगा. आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग बिकॉज आई वांट टू एंश्योर दैट आप रिपीटेशन के द्वारा चीजें याद रख पाए. ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा. ओके, चलिए ग्रेट. सो नाउ आई एम डिस्कसिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, देयर आर 2 आर्टिकल्स related to this reads. One is article number 32 and other is article number 226. ठीक है, so article 32 differs from article 226 है ना, in a very interesting manner. Article 32 can be invoked only for the enforcement of fundamental rights. किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ही जाकर आर्टिकल नंबर 32 इन्वोक किया जाता है और आर्टिकल 32 में पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा है. Whereas article number 226 not only be enforced for fundamental right but it can be enforced for any other purpose as well. This means Supreme Court's power under article 32 is restricted as compared to the power of High Court under article number 226. ठीक है, so that way there's a big difference. article number 226 के द्वारा आप फंडामेंटल राइट के अलावा भी कोई और पर्पस की वजह से, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो गया या ऐसा कोई भी एक्शन हो गया, उसकी वजह से आप ये रीट इश्यू करवा सकते हैं. वाइल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की वजह से ये रीट इश्यू करवा सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस 32 और 226 का डिफरेंस. बट द मेन पॉइंट इज हेबियस कॉर्पस, शो मी द बॉडी, दैट इज हाउ इट कैन बी यूज्ड. इट्स अ रीट. ओके, चलिए ग्रेट. सो विद दिस आई क्लोज दिस डिस्कशन. ठीक है, डू नॉट फॉरगेट to join protalentdigital.com. There we have uploaded a kind of PDF on this and उसके पीछे प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है. प्लीज उन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करिएगा and that will give you lot of benefit for your, you can say, learning purpose. Okay, thank you very much and all the best for your CLAT preparation. Thank you.